तो दोस्तों मैं आ गया हूँ स्नैपचैट इंडिया AR डे 2025 में, जहां पर स्नैपचैट ने ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग शोकेसेस करे हैं, कुछ इंडिया स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स भी करे हैं। लेकिन द स्टार ऑफ द डे वाज द स्नैपचैट 5th जनरेशन स्पेक्टिकल्स, जो कि यहाँ शोकेस किए गए हैं, कुछ सिलेक्ट इंडियन डेवलपर्स को दिए भी गए हैं टू मेक एप्स फॉर दीज ग्लासेस। नाउ वी ऑल नो कि किस तरह से जो है स्मार्ट ग्लासेस को नेक्स्ट कंप्यूटिंग इनोवेशन माना जा रहा है। वी हैव सीन समथिंग फ्रॉम मेटा रेबैन ग्लासेस जो आए, बहुत बड़े हिट हुए, एंड नाउ स्नैपचैट हैज इंट्रोड्यूस समथिंग सिमिलर इन द ऑगमेंटेड रियलिटी स्पेस। मैंने ये ग्लासेस यहाँ पर यूज करे, कुछ इस तरह से ये दिखते हैं। यस, थोड़े से बड़े हैं साइज में, आई एड्रेस दैट लेटर ऑन, बट जो एक्सपीरियंस था वो काफी इमर्सिव, काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। द मोमेंट यू वेयर देम, राइट साइड में जो है एक बटन दिया हुआ है, उसको अगर आप प्रेस करते हो तो ये टर्न ऑन हो जाते हैं, और सामने जो है एक वर्चुअल स्क्रीन इज व्हाट यू कैन सी विद अ 46 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू। तो अगर आप थोड़ा बहुत मूव करते हो तो भी वो स्क्रीन आपके साथ रहती है। और इन ग्लासेस के लिए स्नैपचैट ने एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, स्नैप OS, जो कि आपको सामने स्क्रीन के ऊपर दिख जाता है। दैट्स व्हाट योर होम मेन्यू और योर UI इज लाइक। वहां पर बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारे आइकन्स आपको दिख जाते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर एक मेन्यू दिया हुआ है जिसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर टॉगल कर सकते हो, और एक स्क्रोलर भी है जिसे आप पिंच करके सिलेक्ट करके स्क्रोल कर सकते हो, एंड इट्स ऑल वेरी इमर्सिव, वेरी वेरी नाइसली डन। जो बहुत सारे एप्स हैं वो अलग अलग डेवलपर्स ने स्पेसिफिकली इन्हीं स्पेक्टिकल्स के लिए डेवलप करे हैं, इंक्लूडिंग सम इंडियन डेवलपर्स, और इनमें से कुछ एप्स जो है मैंने यूज भी करे थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गोल्फ खेला, एक जो पूरा फील्ड है वो मेरे सामने क्रिएट हो गया था। द बॉल वाज राइट हियर, आई कुड स्विंग, टेक अ स्विंग, और बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस यहाँ पर था। देयर वाज अ गेम जिसका नाम था बीट बॉक्सर, जहाँ पर मैं क्यूब्स को बॉक्स कर रहा था, अर्निंग पॉइंट्स थ्रू दैट, एंड देयर वर लॉट ऑफ अदर गेम्स। ये सारा जो कंटेंट है, सारा एक्सपीरियंस है, इसे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ऑन द लेफ्ट साइड जैसा बटन, उसे बस प्रेस करना है, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी एंगेजमेंट कर रहे हो यूजिंग द ग्लासेस, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, एंड देन यू कैन शेयर इट ऑन स्नैपचैट। साथ में जो है ग्लासेस के अंदर एक कैमरा भी है, इनबिल्ट स्पीकर्स दिए हुए हैं, सो यू कैन ऑल्सो टेक कॉल्स थ्रू दीज ग्लासेस, शेयर ऑल दीज एक्सपीरियंसेस विद योर फ्रेंड्स ऑन स्नैपचैट। सो यस, ओवरऑल जो है एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मुझे ये लगा, बट इसको लेकर और स्नैपचैट के प्लान्स क्या हैं, हाउ इज इट एग्जैक्टली डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट? टू डिस्कस दैट आई सैट डाउन विद Srivatsan, who's the head of AR partnerships for Snapchat. Let's hear what he had to say. So India is now the second biggest market for Snapchat. We are now producing the highest number of lenses in the world. What do you think is driving this growth? Snap is a very, India especially, is a very young market. Right? We have a lot of Gen Z millennials here, and they are very, very tech savvy. They're super tech savvy. They understand tech really well, and they adopt new technologies really quick. And we've also made it super easy for developers and non-developers to use lenses and create lenses today. Snap globally has around 375,000 developers across, and India has a lion's share of the second largest market when it comes to creators, and we do produce the highest number of lenses on Snapchat globally. Three main factors I want to cover in this case. One is a super young audience who are super tech savvy and able to actually create lenses. Second are tools and tech. With Gen AI and with Easy Lens, today you can become a lens creator yourself. Feels so much good to hear, to listen to that. Yes, like how you have prompt to publish, you can, like how you have text to prompt, today you can actually prompt your lenses and have lenses ready. And today we're going to show you a couple of experiences. Please feel to try them out. And the third part is, I think, the overall adoption and the recognition that get on the Snapchat app. So today when you build an AR experience, the engagement that you get on Snap as an AR platform is way higher than any other platforms that you can actually get that today. So these are the three reasons I believe that Snapchatters love creating lenses on Snap India. Now you spoke about the AR experiences. How do you see that evolving in India? Today, I think predominant of the AR experiences happens on the phone. But at Snap, we've recently launched our 5th generation spectacles. Right here. Yes, yeah. I can talk about these as well. Which means now, as humans in general, we're not used to sticking towards the screen. We do everything in 3-dimensional, right? When you and I talk, it's 3-dimensional. So with the same idea, we built our new spectacles, the new form factor spectacles, which allows all our users to be completely hands-free. The experience that you see are digital, which is ingrained in your physical world. How you interact with an object is exactly how you interact with a physical object in real time. You pinch to take the object, drag the object. You use both hands if you want to enlarge the object. So we see AR to be evolving way beyond screens. So today brands use AR to help shoppers try different clothes on them, try different outfits on them, how do different colors look on them. We have many brands like Ajio, Myntra, who've done their sales
on Snapchat today. We also see AR transforming a lot in the education space. We've partnered with various other colleges, and AR is today becoming mainstream in education. We have colleges, not only students, also the teachers now want to learn build lenses, and they've started to learn to build lenses. And when they start, they understand how easy and simple it is. So across many universities in India, we've started teaching them Lens Studio. So there are some other products that are in the similar space, be it a mixed reality glasses or AR glasses, right? My question to you is, how is this product, the Snap glasses, spectacles, are different from the products that are already in the market? Let me start with my personal experience. I've been a developer myself. I've been building for devices over the last 10 years. And whenever you get into the field, you first have an imagination of how you perceive the device or the glasses to be. To me, Snap has come the closest in the entire decade. What I imagine to be an AR world, where the device is completely standalone. There are no tethers, there are no external computing powers, and it's completely hands-free for you to use. The next one is the Snap OS. Unlike all the other devices out there, we first built the form factor, and then we decided how the display is going to actually fit within the form factor. So it's not built around the display unit, it's the display unit is built to fit within the form factor here. And of course, next come the entire ecosystem of developers who are building experiences today, right? We have a lot of published applications and experiences that you can experience on spectacles today. We have many Indian developers building for the spectacles today. Let it be games, let it be education, let it be information. There are a lot of experience you can see on the spectacle. I know that you've already given it to a few Indian developers to build experiences for the users, but what's the larger play here? How do you plan to make these spectacles more accessible to people in India? Today we have a few developers building for spectacles from India. A lot of the applications are already published on the experiences and published in spectacles also. But anyone in India who would wish to build for the spectacles can apply for the spectacles through our Lens Studio platform. Lens Studio is the same platform that we built for the phones as well as for the spectacles. We're also doing a few other initiatives to engage folks in AR, where we conduct meetups across the country. We've done more than 120 meetups. We have engaged more than 6,000 folks where they get exposed to Snap AR, where they get exposed to spectacles, and we teach them how to build for these. And they can apply through these initiatives, yes. Now with AR evolving and becoming such an important part of all the social media experiences, how do you see it sort of redefine social media platforms and our social media experience in the future? If you look at Snap's journey overall, what Evan Spiegel and Bobby Murphy, their co-founders, have done, they made sure the app mimics your real life, right? For example, if this conversation is recorded, of course, but tomorrow, the conversation just before we enter, when you and I speak, it's not recorded, it's ephemeral, right? And how we communicate with each other is completely visual. We don't text, we don't type and show things to each other, right? So I think the app entirely mimics the real life here. And with the same belief, we've been working at AR for the last more than a decade. We built the device keeping in mind the form factor that it should not be an hindrance or be like a laptop that's stitched to your face. Because if you look at current computing system, it's all limited by a screen. But whereas everything else around us is three-dimensional. So we want to bring the same interface to all other applications that we do. So technology doesn't feel like it's actually blocking you into a four-sided screen. Rather, it's letting you freely move around and interact with digital and physical objects together. All right. Thank you so much, Srivatsan, for your time. Very interesting insights. I hope it makes a lot of sense for our viewers as well. They get to learn a lot about these spectacles, your initiatives in India through this conversation. Thank you so much today. That's what Srivatsan had to say, and no doubt ये एक interesting concept है, but अभी अपने limitations के साथ आता है. So you have to look at it in a way कि this is still work in progress. अब पहली बात तो जो footprint है इन glasses का वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े glasses हैं. You can see इतने thick हैं. Weight जो है वो काफी ज़्यादा है, 228 grams. Imagine S25 Ultra जो phone आया था उसका weight था 219 grams. तो उससे भी भारी glasses हैं which you wanna wear on your face. बहुत बड़े लगते हैं. When I was using them 10-15 मिनट में मेरे साइड पे थोड़ा सा स्वेट भी आने लग गया था. तो डेफिनेटली इन्हें स्लिम करने की जरूरत है, इनका वेट जो है वो कम करने की जरूरत है. एंड थर्ड थिंग इज द सब्सक्रिप्शन. ग्लोबली जो ये ग्लासेस अवेलेबल है $99 का सब्सक्रिप्शन है. दैट कम्स डाउन टू 10,000 रुपीज. क्या आप लोग इंडिया में अफोर्ड कर सकते हो? दैट्स ऑन टॉप ऑफ द कॉस्ट ऑफ ग्लासेस. दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू डिसाइड. इसके अलावा अभी जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी है कि सिर्फ कुछ सिलेक्ट डेवलपर्स को, बट आई बीन टोल्ड 6 डेवलपर्स को ये ग्लासेस दिए गए हैं.
तो उसके बियॉन्ड कैसे जाएंगे? यस, देयर इज अ रिव्यू प्रोग्राम जो श्रीवत्स सर ने बताया, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। बट ऑल दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस विल डिसाइड वेदर दीज ग्लासेस बिकम सक्सेसफुल इन इंडिया और नॉट। लेट मी नो आपको कैसे लगे स्नैपचैट के नए 5th जनरेशन ग्लासेस। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे डेटा दिया है स्नैपचैट ने कि भाई इंडिया जो है अब इनके लिए सेकंड सबसे बड़ा मार्केट है और सबसे ज्यादा जो लेंसेज ग्लोबली क्रिएट हो रहे हैं वो इंडिया में ही हो रहे हैं। तो आई एम श्योर आप भी स्नैपचैट यूज करते हो कि नहीं करते हो, तो ये बताओ क्यों नहीं करते हो, करते हो तो व्हाई डू यू यूज इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।